We struck something on takeoff at about 8,000 feet, a very heavy object. We're not sure what it was, but it was a very loud bang. We're going to go back and have it inspected. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 23 नवंबर 2022 यूनाइटेड एयरलाइंस का बोइंग 777-300 फ्लाइट नंबर UAL999 न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ब्रसल्स बेल्जियम जाने के लिए टेक ऑफ किया। जब जहाज़ 9000 फुट की बुलंदी से गुजर रहा था तो पायलट ने रेडार कंट्रोलर को कहा कि वो उन्हें इसी जगह पर कुछ देर के लिए डिले करने के लिए होल्ड करें। इसे डिले वेक्टर्स भी कहते हैं। बाद में इसी जगह पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि टेक ऑफ के बाद जब वो क्लाइंब कर रहे थे तो 8000 फुट की बुलंदी से गुजरते हुए कोई बहुत सख्त चीज जहाज से टकराई थी। फिर पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और वापस न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए रिक्वेस्ट भी कर दी। इस फ्लाइट यूनाइटेड 999 पर हवाई जहाज बोइंग 777 था, जिसकी कैटेगरी हैवी है और इसके लिए H लिखा जाता है। ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि हवाई जहाज़ की कैटेगरी हैवी, मीडियम या लाइट कौन सी है, ताकि दूसरी फ्लाइट्स को टेक ऑफ लैंडिंग पर इस जहाज़ से महफूज फासले पर पीछे प्लेस किया जा सके, क्योंकि बड़े और वजनी हवाई जहाज़ अपने पीछे हवा में ऐसी खतरनाक टर्बुलेंस पैदा कर देते हैं जो पीछे आने वाले इनसे कम वजन वाले हवाई जहाज़ों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसको वेग टर्बुलेंस भी कहते हैं। ऐसी सूरत हाल में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वेग टर्बुलेंस की कॉशन देते हैं। इस ऑडियो में मुख्तलिफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स की गुफ्तगू सुनाई देती है और सब के लिए मैंने सिर्फ कंट्रोलर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये यूनिट्स अप्रोच, डिपार्चर और टावर वगैरह की हैं। पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रिपोर्ट करता है कि जब मैं डिपार्चर के लिए 8000 फुट की बुलंदी से गुजर रहा था तो कोई सख्त चीज़ जहाज से टकराई थी। मुझे श्योर नहीं है कि ये परिंदा था या कोई ड्रोन। वैसे मैंने अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 30 साल कैरियर में किसी हवाई जहाज़ को 8000 फुट की बुलंदी पर परिंदे से टकराते हुए नहीं देखा। पायलट बार बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कोई सख्त चीज़ का जिक्र कर रहा था, तो बहुत मुमकिन है हवाई जहाज़ से टकराने वाली चीज़ ड्रोन ही हो। चेकलिस्ट पूरी करने के लिए कुछ देर होल्डिंग करने के बाद पायलट फैसला करता है कि मैंने वापस अपने डिपार्चर हवाई अड्डे पर ही लैंड करना है ताकि जहाज़ की इंस्पेक्शन की जा सके। जैसे ही किसी हवाई जहाज़ को इस तरह की सूरत हाल यानी इमरजेंसी का सामना करना पड़े तो जिस हवाई अड्डे पर उसने लैंड करना है वहाँ इमरजेंसी अनाउंस कर दी जाती है और इसकी मखसूस तैयारी होती है। आप इन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की ऑडियो में फौरन ये बात सुनेंगे कि कंट्रोलर पायलट से पूछते हैं हवाई जहाज़ पर कितने अफराद सवार हैं और इसके पास ईंधन कितना है। अफराद की तादाद मेडिकल की तैयारी के लिए और ईंधन की मिकदार हवाई जहाज़ पर मुमकिना आग लगने की सूरत में फायर फाइटिंग की तैयारी के लिए पूछी जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स पायलट को खुली छुट्टी दे देते हैं कि आप जो चाहते हैं उसकी इजाज़त है, बल्कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट से पूछता रहता है कि उसे और क्या चाहिए। ये सब इसलिए किया जाता है कि पायलट इज़ द बेस्ट जज। इमरजेंसी जहाज़ को पायलट ने फ्लाई करना है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का किरदार सिर्फ मदद करना होता है। आखिरकार ये जहाज़ सेफली लैंड कर जाता है। Alright, direct Merrick, but and stand by. It looks like we may have to do a return to Newark. If you could give us another heading. Heading 060 for now. 060 for now. United 999 Heavy. And departure, United 999 Heavy. Right, sir. Yeah, could we get assigned holding or delayed vectors while we run some checklists? Not a problem. Just stay on that heading for now and just hold the U at 10,000 work for you. Yeah, 10,000 works, and we'll stay on this heading. United 999 Heavy. Thank you. I'll give you that in my airspace. Understood. Thanks. And New York, United 999. United 999, go ahead. We're going to go ahead and declare an emergency at this time. We're still going to need a little bit of time before heading into Newark. Can I just keep you posted? No problem. United 999, what's the nature of the emergency? We struck something on takeoff at about 8,000 feet, a very heavy object. We're not sure what it was, but it was a very loud bang. We're going to go back and have it inspected. Roger, and you just want to stay with me vectors for now? That would be perfect. Okay, when you get a chance, just give me the number on board and the fuel remaining. Fuel's on board 354, 9 hours of fuel. Thank you. And departure, United 999 Heavy. We're ready to return to Newark. Yeah, 999 Heavy, roger, turn right heading 280. Right turn 280, United 999 Heavy. United 999 Heavy, you have a second? Yeah, go ahead.
I guess they're asking if you need any kind of assistance or if you know what happened or what you hit or anything like that. Yeah, we were climbing out around 8,000 and we struck something very hard. We're not sure if it was a bird or a drone. We didn't get a good visual on it. As far as the assistance goes, out of our abundance of caution, we would like the trucks to stand by for us, but other than that, no. Okay, when you have time, can you please give me souls and fuel? 354 for souls on board and 9 hours of fuel. United 999 Heavy. 9 Heavy. They're asking if you know, like, where you hit. Was it in the front, the fuselage, the wing? It was the left front, just below the pilot window. 999 Heavy, contact Newark Tower, 118.3, have a good night. Caution my turbulence on a Heavy, Dreamliner on final. Roger, 18-3, United 999 Heavy, thanks for that. United 999 Heavy, Newark Tower, caution way turbulence on a Heavy Boeing 787, wind 0307, runway 4 right, clear land. Clear land 4 right, United 999 Heavy. United 999 Heavy, do you require any assistance? Negative assistance, United 999 Heavy. United 999 Heavy, roger, cross runway 4 left at Mike, and you can contact ground on 18. उम्मीद है आज की रियल ऑडियो और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।